morning. How are you? I hope you all are fit, fine and safe at your home. Okay, now today we will learn U words in subject English. Okay, we had already learned A, E, I, O words. Okay, now tell me how many vowels are there? There are 5 vowels. A, E, I, O and U. Okay, now today we will learn U words in subject English. Okay, now see here. Now let's start reading. Okay, now see here. S, U and sun. Okay, S, U and sun. G, U and gun. G, U and gun. J, U, G, jug. J, U, G, jug. M, U, G, mug. M, U, G, mug. C, U, P, cup. C, U, P, cup. H, U, T, hut. H, U, T, hut. T, U, B, tub. T, U, B, tub. N, U, T, nut. N, U, T, nut. Okay, we will read U words. Okay, now how we will write in English notebook. Okay, now let's start writing. Now then write it the spelling of hurt. Okay, now let's start writing H, U, T, hut. H, U, T, हट. ओके, HUT हट ऐसे ही आपको बोल बोल के पूरी लाइन लिखनी है. ओके, नाउ सी हियर. व्हाट इज दिस? इट इज अ नट. नाउ रीड द स्पेलिंग ऑफ नट. NUT, nut. Okay, then write the spelling of nut. NUT, nut. NUT, nut. ओके, ऐसे ही नट का स्पेलिंग भी आपको बोल बोल के लिखना है. नाउ सी हियर. व्हाट इज दिस? इट इज अ कप. नाउ रीड द स्पेलिंग ऑफ कप. CUP, cup. Then write the spelling of cup. CUP, cup. Okay, CUP, cup. ऐसे ही आपको कप का स्पेलिंग बोल बोल के अपनी नोटबुक में लिखना है. Now see here. What is this? It is a tub. Now read the spelling of tub. TUB, tub. Now write the spelling of tub. TUB, tub. TUB, टब. ओके, ऐसे ही आपको टब का स्पेलिंग भी बोल बोल के पूरी लाइन में लिखना है. ओके, नाउ अभी आप लोग राइटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या लिखना है? मार्जिन लाइन में आज की डेट, C.W. वर्ड्स, HW से ड्रॉ 3 पैरेलल लाइन और स्पेलिंग लिखना है हट, नट, कप, टब. ओके, अभी ऐसे ही आपको इंग्लिश की नोटबुक में कैसे लिखना है? नाउ सी हियर. राइट इट डाउन. टुडेज डेट, CW words. Now read the spelling. HUT hut, NUT nut, CUP cup, NTUB tub. और नीचे क्या लिखना है? HW से. और ये 3 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है पेंसिल से. ओके, और आप लोग राइटिंग करोगे तो पेंसिल से ही राइटिंग करनी है, पेन यूज करनी नहीं है. ओके, देन ऑल ऑफ यू बाय. हैव अ नाइस डे.